हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट वेयर वी विल डिस्कस इन दी टुडेज वीडियोस द राइज ऑफ सोशलिज्म इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो सोशलिज्म की जो विचारधारा है, इट इज़ प्रो पुअर एंड प्रो ऑप्रेस्ड एंड एनी सिस्टम दैट लीड्स टू एगैलिटेरियनिज्म, that is where there is no oppression of the weaker section is called socialism. एंड जो इकोनॉमिक ग्रुप्स के हिसाब से वेरियस क्लासेस बनाई गई हैं, लाइक कैपिटलिस्ट क्लास, वर्किंग क्लास एंड पीजेंट क्लासेस। तो अलग अलग क्लासेस में बटी होती है सोसाइटी, और उसी सोसाइटी को एगैलिटेरियनिज्म की तरफ ले जाना इस सोशलिज्म। एंड इसका एक और टर्म सुना होगा, कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म क्या होता है? वेयर कम्युनिटी हैज़ पावर एंड इट इज़ अ वे टू अचीव सोशलिज्म। और ये अप्रोच कार्ल मार्क्स ने बताया था। तो सोशलिज्म को अगर देखें तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है या एक अम्ब्रेला गोल है, एंड देयर आर वेरियस रोड टू अचीव सोशलिज्म, लाइक मार्क्सिज्म, माओइज्म, लेनिनिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड फेबियनिज्म। जो सोशलिज्म है, इट इन्विजाज एन इगैलिटेरियन सोसाइटी which is devoid of oppression of the weak, and this society focuses on the welfare of the masses, and the welfare will be the economic welfare, political welfare and social welfare. और एक सोशलिस्ट सिस्टम जो होता है, therefore would focus on reduction in the concentration of wealth and devolution of decision making, and the power in economy to the agrarian and industrial workers. And in the policy, the focus is on the giving voice to the masses and inventing the and preventing the elite जो क्लासेस हैं वो कैप्चर ना कर पाएँ पॉलिटी को। तो ये प्रिवेंशन इसका मेन फोकस रहता है। एंड देयरफॉर फोकस इज एन ऑन अचीविंग द इक्विटी इन द सोसाइटी एंड टू एस्टेब्लिश अ हार्मोनियस सोसाइटी विथ लेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। The socialism is an umbrella term, and in the sense that it symbolizes a goal of an egalitarian society. And socialism, it included within its ambit the different schools of thought or shades of communism, like Marxism or communism, Maoism like यानी agrarian communism, Fabyism जिसको social democracy बोलते हैं, and democratic socialism. दोस्तों याद रखना, सोशल डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आर टू डिफरेंट थिंग्स। एंड कुछ कंट्री स्पेसिफिक वेरिएंट्स भी हैं, लाइक इंडियन सोशलिज्म इज़ एन कंप्लीट डिफरेंट वैरायटी ऑफ सोशलिज्म। तो these shades of socialism can also be visualized as different roads to socialism. For like 1945 में निकिता क्रश्चेव, the head of USSR, जो थे उस समय, while allowing the freedom of domestic policy making to the Eastern European country, started that there exist a multiple roads to socialism, and hence the different thinkers and leaders gave different theories and adopted different practices and policies suited to their context to achieve the goal of a socialist society. तो इन प्रैक्टिकल यूजेज अगर बात करें तो द रेडिकल सोशलिस्ट और एक्सट्रीम लेफ्ट विंगर्स आर रिफर्ड एज कम्युनिस्ट, उनको बोलते हैं, थोड़ा एक्सट्रीम लेफ्ट रहते हैं। फॉर एग्जांपल वन पार्टी स्टेट ऑफ चाइना एंड यूएसआर ना, दे आर रिफर्ड एज अ कम्युनिस्ट स्टेट। इसके अलावा लेस रेडियंट सोसाइटी जो होती है, हु आर ईदर बिलीव इन को एग्जिस्टेंस ऑफ सोशलिज्म और कैपिटलिज्म और बिलीव इन द पीसफुल मीन्स और ग्रेजुअलिज्म एंड यूजुअली आर रिफर्ड एज सोशलिस्ट। तो अगर सोशलिस्ट बोल रहे हैं तो थोड़ा सा मॉडरेट सोशलिस्ट है, मतलब सोशलिज्म फॉलो कर रहा है। एंड हेंस इन पॉलिटिक्स द लेस रेडिकल लेफ्ट विंग सोशलिस्ट पॉलिटिशियन आर कॉल्ड देमसेल्फ सोशलिस्ट टू डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम मोर रेडिकल लेफ्ट विंग पॉलिटिशियन हु कॉल देम एज कम्युनिस्ट। तो वो बोलते हैं कि नहीं हम सोशलिस्ट हैं भाई, कम्युनिस्ट वो लोग हैं। हाउएवर बोथ दी सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट बिलीव इन दी, सोशलिस्ट हो चाहे कम्युनिस्ट हो, उनका मेन जो है कॉमन गोल है, बिलीफ है, इज़ टू अटेन द सोशलिज्म। अगर एक एक करके वेरियस स्कूल ऑफ थॉट देखें तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स का मार्क्सिज्म, और इसको साइंटिफिक सोशलिज्म भी बोलते हैं। तो कार्ल मार्क्स वांटेड एंड ऑफ कैपिटलिज्म एंड ही बिलीव इन द इनएविटेबिलिटी ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म की ये तो आएगा ही आएगा, इनएविटेबल है। एंड दिस वॉज बिकॉज ही बिलीव दैट फ्यूडलिज्म कुड नॉट सर्वाइव एज अ सिस्टम because it was exploitative for the masses and gave power to the minority elites.
Similarly, capitalism exploits the masses who are workers and gives power to minority elites like capitalist or middle class को. And no system that results in exploitation of masses by a minority can survive, according to Karl Marx. And in a capitalist economic system, the owner of means of production is the capitalist, and hence the decision making power over the process of the production is in the capitalist, and hence the decision making power over the process of प्रोडक्शन एंड ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस जो कि जैसे प्रॉफिट हुआ है इज़ विद द कैपिटलिस्ट एंड नॉट विद द वर्कर्स. So the capitalist works for the profit motive, and wages of workers are a cost of production, and therefore profits of capitalist are inversely proportional to the wages of the worker. तो wages of worker जितना ज़्यादा रहेंगे तो profit उतना कम रहेगा, and hence there is a conflict in the interest of capitalist and interest of workers. तो उन्होंने बोला दोनों भाई antagonistic हैं. Since the distribution of surplus is decided by the capitalist, workers who are masses got a minority share of the value produced by them. काम वो कर रहे हैं भाई और प्रॉफिट कैपिटलिस्ट खा रहा है. ऑल्सो वर्कर्स लूज देयर ऑटोनमी एंड कंट्रोल ओवर द वैल्यू एंड दे प्रोड्यूस दैट इज देयर इज़ अ एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ वंस लेबर कि हम खुद ही बना रहे हैं वो चीज़ हम खुद ही कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं. टू बिगिन विद देयर इज़ अ हार्मोनी इन द सोसाइटी as it is a natural for humans to come together for joint production. But capitalism leads to conflict of interest by dividing humans into workers and capitalists, which leads to division of society into classes and hence the class conflict. Marx desired a classless society, and end of profit motive and private property would result in the end of conflict in the society. ये उनका मानना था. Karl Marx was pro-industrialization and wanted abundance of goods goods in the society. However, the production should be for social good and not only for the profit motive. तो इंडस्ट्रिएशन के खिलाफ नहीं थे, कैपिटलिज्म के खिलाफ थे. He was against the industrial capitalism and not against the industrialist. For overthrow of capitalism, there is a need of revolution, and hence would be the revolution which would be done by the worker classes. That is, Marx considered the workers as the vanguard of the communist revolution. Marx empathized with the grievances of oppressed peasants, however believed that they cannot lead the communist movement. तो peasants से emphasize तो करते थे, उनको लीडर नहीं मानते थे. This was because Marx considered peasants as petty bourgeois, as they have vested interest in private properties that breeds profit motive and capitalism. Also, the sense of joint production is absent because of a small peasant depend upon family labor और इन देयर स्मॉल फॉर्म्स. तो वो फैमिली में ही काम हो जाए तो कोई जॉइंट प्रोडक्शन है भी नहीं. हैंस पीजेंट वुड हैव टू बी लेड बाय द वर्किंग क्लास विच इज़ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी क्लास. तो टू इस्टेब्लिश द इकोनॉमिक सिस्टम which is based on the community ownership, collective ownership of means of production and all decision making powers with the community. The communist revolution can take place only by the violent method, and hence the call Marx थे जो he was anti-state. This is because Marx considered the state and its police, military, laws or agents laws as agents of जो bourgeoisie, and hence the capitalism is too powerful to overthrown by the peaceful means. तो उनको था कि भाई ऐसे तो नहीं होगा, वायलेंस करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल in French Revolution of 1789, workers did not get right to vote. Even after our revolution, and in American Revolution जो चला 1765 से 89 तक, तो right to vote was linked with the income criteria again. So after the French Revolution and American Revolution, the right to vote was linked with the property criteria, and hence denying voting rights to the poor workers. Hence parliamentarians were representative of propertied class, and consequently the जो भी law बनाए जाते थे and the institution of the state were the guardians of interest of capitalist class. Also, Marx wanted a stateless society because he believed in the complete devolution of the power to the community. The communist revolution will take place when the society is fully industrialized, as
then the worker who are revolutionary class will be the masses. Mass decide dictatorship of proletariats, that is the poorest form of the democracy in a fully industrialized society. तो वो डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर्स चाहते थे, ये वर्किंग क्लास की डिक्टेटरशिप हो. एज पर दी मार्क्स, रिलीजन एंड मोरालिटी आर ओपियम ऑफ मासेस, ये उनका बहुत फेमस कोट है. एंड दैट रिलीजन एंड मोरालिटी इज ओपियम ऑफ मासेस विच डिस्ट्रैक्ट एंड डिस्करेज देम फ्रॉम ओवर थ्रोइंग ऑफ देयर ऑपरेसर्स, कि भाई नहीं मोरालिटी में रहो, डिसेंटली रहो. तो वो ये सब इसलिए है कि मासेस ओवरथ्रो ना कर पाए, उनको डिस्करेज किया जाए ओवरथ्रो, उनके ऑपरेसर्स को ओवरथ्रो करने के लिए. And Marx wanted workers of the whole world to come together, not just of his region. And since the capitalism was the global force, global unity among the workers, that is internationalism, was needed for overthrowing of the capitalism. And Marx discarded division of labor on the basis of ethnicity, language, religion, as these hurt the unity of working class. So, in 1948, Marx and the Engel brought out the Communist Manifesto, which gave a call of workers to the world to unite against the capitalism. Marx had formulated his theories by observing the impact of industrial capitalism on British society. In 1867, he pushed his das capitalism, which was an economic critique of capitalism. He published his work. उनका डैश कैपिटलिज्म उनका वो काम था, उन्होंने पब्लिश किया 1867 पे. एंड ही हाईलाइटेड दैट द कैपिटलिज्म इज अनस्टेबल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस इज इनएविटेबल इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. आज नहीं तो कल ऐसा बैठना ही बैठना है. दिस वॉज बिकॉज द वेजेस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द buying power of the masses is in an industrialist society, and these wages are far less than the value of goods to be purchased in society. तो भाई जब परचेज कैपेसिटी नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन रह के भी क्या कर लेंगे. एंड सिंस मार्क्स डिड नॉट जो है एम्पेरिकल एंड did an empirical and economic analysis, and hence his theory is also referred as scientific socialism. इसीलिए इसको scientific socialism बोलते हैं मार्क्सिज्म को. As per the Marx, capitalism is unstable, unequal and undemocratic. Marx died in 1883, and during this time the European economies were rapidly expanding. Unification of Germany and Italy had completed by 1870, and also France had become a stable republic in 1870. The movement of workers had resulted in the consciousness of to workers in the form of right to establish trade union, better working condition, like increase in the wages and all. And this was because laissez-faire was discarded, and need for intervention of workers was accepted due to the pressure created by the वर्किंग क्लास मूवमेंट. लेसेस फेयर इज मीन्स फ्री मार्केट, तो वो नहीं, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था, और इंटरवेंशन ऑफ द वर्कर्स वाज एक्सेप्टेड ड्यू टू द प्रेशर क्रिएटेड बाय द वर्किंग क्लास मूवमेंट. Hence, by 1880, the revolutionary zeal of the communism on decline, and hence a less radical values in favor of coexistence of capitalism by removing the negative aspect of capitalism gained prominence, क्योंकि तब तक जो है कास्ट मार्क की डेथ भी हो गई थी. In 1883, Fabian Society was set up in Britain, and the Labour Party of Britain was an outcome of the feminism in the early 90s. हम लोग देखते हैं फेमिनिज्म क्या है. तो इस विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग जैसे लाइक एनी बेसेंट हैं, इनका होम रूल लीग जो मूवमेंट हुआ था 1916 से 1918 तक, जवाहरलाल नेहरू, बराक ओबामा, दे ऑल आर द फॉलोअर्स ऑफ फेबियनिज्म. तो ब्रिटेन में इसको फेबिनिज्म बोलते हैं, एंड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसको सोशल डेमोक्रेसी बोलते हैं. तो डिफरेंस क्या था मार्क्सिज्म एंड फेबिनिज्म में. मार्क्स जो है एक स्टेटलेस सोसाइटी चाहता था, फेबिनिज्म इज इन सपोर्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्टेट, ताकि वो सोशल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कर पाए. मार्क्सिज्म का था कि गोल था कि भाई एंड ऑफ कैपिटलिज्म करना है, वेरस फेबिनिज्म का था कि नहीं को एग्जिस्टेंस विद कैपिटलिज्म रखना है. तो जो ये फेबिनिज्म है इज़ ए स्कूल ऑफ थॉट ऑफ सोशलिस्ट which stresses on using a welfare state model
to improve the condition of poor. The focus is on using the executive, legislative, and monitoring power of the state to establish the rights right-based regime of the for workers. And hence, unlike the Marx who believed in the stateless society, the federalism is in favor of creating a strong welfare state which is working for the social good. क्या क्या social good करेगा strong welfare state? तो legislative power of the state is deployed to bring the laws which guarantee right of workers in the form of minimum wages, a right of bargaining power, legalizing trade union, participation of worker in management of factories, minimum age to prevent child labor, compulsory contribution by the employer towards the social security of workers, etc. The private sector um, work for the profit motive and hence using the monetary power of the state to provide meaningful employment in less profitable sector in form of establishment of public sector units which works for the social goods rather than the profit motive, and hence जो mixed economy is preferred with the presence of state as well as the private sector in the economy. The state may also bring out schemes of public work programs like Manrega. Social democracy, feminism recognizes the positives of capitalism and does not believe in the overthrow of the capitalism. It also favors the non-violent means for bringing out the socialism, and it is reformist and follow the gradualism as against the revolutionary Marxism. In the polity, it follows the feminism जो था, it favors the multi-party democracy, not the one party state established later by the communist state beginning with the Russia after the October Revolution of 1917. It was the New Deal of 1933 where a strong positive intervention of the state resulted in bringing the US out of the Great Depression of 1929. तो ये इसका significance था. However, in certain cases, the overarching rule of state in economy led to the over centralization in democracy and consequent debilitating in atmosphere in the economy. For example, in India जो license वाला system था, red tapeism and efficiency in the PSUs and not opening up the economy at right time resulted in the economic crisis of in late 80s and specifically 1991. तो ये हो गया फेमिनिज्म जिसको सोशल डेमोक्रेसी बोलते हैं. दूसरा जो था दैट इज़ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? तो इट फोकसेस द फोकस ऑफ दिस स्कूल of thought of socialism is an democracy that is the devolution of power to people at the grassroots level, and hence they neither desire concentration of power in capitalist nor they favor a strong state even if the welfare state or a communist state. They criticize the feminism also as socialism जो है दे डिज़ायर्ड सोशलिज्म फ्रॉम बिलो. हाँ, जो फेमिनिज्म था वो सोशलिज्म फ्रॉम अबव था, इसलिए उसको क्रिटिसाइज़ किया है इन्होंने क्योंकि वो एक वेलफेयर स्टेट स्ट्रॉन्ग वेलफेयर स्टेट की तरफ पक्षधर था, जबकि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये मासेस के थ्रू होना चाहिए. तो ये फ्रॉम बिलो अप एटीट्यूड था, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग पावर टू द कम्युनिटी टू ब्रिंग अबाउट द सोसाइटल सोशलिस्ट चेंजेस and to bring about socialist society. So in economy they favor this control of factories with workers, removal of the concentration of land holding in agriculture and community farming. In polity they want an inverted structure where maximum power is located at the grassroots level, and if there has to be a state in which state it should be a very weak state. And they criticize the strong communist one-party state as it results in more shifting of the power from capitalist to elite party officials and not to the masses. They criticize feminism as it aimed to create the richer slaves but a slave nevertheless. They also there are two groups, एक radicalist होते थे, एक reformist होते थे. तो radical believes in violent revolution to establish democratic socialism, while reformists believe the peaceful means. ये हो गया. अगर इंडियन सोशलिज्म की हम लोग बात करें तो इंडियन सोशलिज्म इज रिफर टू एज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ओनली
as it focuses on the devolution of power to Panchayat Raj institutions, urban local bodies, and to also to tribal through 5th and 6th schedules. However, Indian socialism is unique and also has features of feminism and democratic socialism, and ideologically it is influenced by Gandhism also. तो जो इंडियन अगर पॉलिटी की बात करें तो लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड क्राइटेरिया हैं, जेंडर इक्वलिटी के प्रोविजंस हैं, कास्ट रीजन लिंग्विस्टिक इक्वलिटी के प्रोविजंस हैं, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्कीम्स लाइक मनरेगा, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन स्कीम्स हैं, और एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हैं। लीगल पावर ऑफ द स्टेट देखें तो मिनिमम वेज एक्ट है, डायरेक्ट एंड ट्रांसफ़र डीबीटी स्कीम्स हैं, और पोस्ट 1991 जो है कैपिटलिज्म जो है और सोशलिज्म का जो है हेल्दी बैलेंस बनाए रखने की जो है बात की गई थी। तो ये इंडियन सोशलिज्म का एक वेरिएशन हो गया। देन कमिंग टू एग्रेरियन सोशलिज्म, तो मार्क्सिज्म जो थे, मार्क्सिज्म इज़ बायस्ड इन फेवर ऑफ वर्कर्स एज इट बिलीव दैट कम्युनिटी रिवोल्यूशन कैन ओनली बी लेड बाय द वर्कर्स ना, उन्होंने पीजेंट्स को मना कर दिया था कि वो लीड नहीं कर पाएंगे। द फॉलोवर्स ऑफ मार्क्स एंड कम्युनिज्म इन एग्रेरियन इकोनॉमीज मूव्ड अवे फ्रॉम दिस बायस एंड अटेम्प्टेड टू एस्टेब्लिश कम्युनिज्म centered around the peasants and rooted for agrarian economy like Mao Zedong of China। तो इसलिए माओइज्म को एग्रेरियन सोशलिज्म बोलते हैं। वो एग्रेरियन कम्युनिज्म put focus on removal of concentration of wealth in agriculture sector, and it would focus on the end of private property and replacing it with the collective ownership of the community, while socialists focus on the land redistribution with ending private property। नहीं, उन्होंने बोला प्राइवेट ही रहेंगे लेकिन कलेक्टिव ओनरशिप रहेगी इन कम्युनिटी। इन एग्रेरियन कम्युनिज्म the peasants become an agrarian workers engaged in joint production, while in agrarian socialism, agrarian communism में peasants became the agrarian workers and engaged in joint production, लेकिन agrarian socialism में focus is on the voluntary pooling of the resources by small landowners for joint production without the abolishment of the private property। In India, agrarian socialism was followed as zamindari was abolished after the independence and land redistribution was done in favor of the actual cultivators। The formation of voluntary organization of peasants in the form of cooperative society in different subsectors of the agrarian economy. In India, there are the cooperatives in dairy sectors, cooperative banks for providing credit, cooperatives with the seed bank, etc. In recent time, there is a focus of farmers producer organizations, FPOs। These FPOs try to provide 360-degree assistance to the farmer and also collaborate with the private sector। जो FPOs होते हैं, they are the true representative of the farmers। तो ये रहा सोशलिज्म और उसके वेरियस वेरिएंट्स और उसके स्कूल ऑफ थॉट्स अलग अलग टाइप के। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को इस तरह के कंटेंट के लिए, और शेयर करें अपने पीयर्स में, और जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें, और जो ऐसा जीके में ओवरऑल इंटरेस्ट रखते हैं उनमें। और आपका जो भी सजेशन हो, किसी भी टाइप का कोई भी फीडबैक हो, प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट में आप उसको टाइप करें। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।